Hello everyone, welcome to Edufundae. Today we're gonna discuss the subtopic of thermodynamics, that is enthalpy and expression in enthalpy change. So let us see. Enthalpy. What is enthalpy? It is the total heat content of the system. So we can say that enthalpy is known as total heat content of the system. So here is the definition of enthalpy, that enthalpy can be defined as the sum of internal energy of the system, that is denoted by U, and the energy arises due to its pressure and volume. So the expression of enthalpy became H is equal to U plus PV. Now enthalpy is a state function. Thermodynamics में we are having two types of functions, state function and path function. और जो state function होता है that depends upon the state of the system only. For example, अगर हम A to B जा रहे हैं तो इस कन्वर्शन के लिए जो पाथ फॉलोड होगा उस पे स्टेट फंक्शन नहीं डिपेंड करता है. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज A एंड B. और जो पाथ फंक्शन है वो किस तरह से ये प्रोसेस हुआ, क्या पाथ फॉलोड हुआ, उस पे ये डिपेंड करता है. सो द एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. नेक्स्ट इज एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Now what is extensive property? That depends upon the mass of the matter. So enthalpy depends upon the mass of the matter. That is why it is an extensive property. Next we are having is expression in enthalpy change. Now let us derive the expression for enthalpy change. So formula of enthalpy. We have already seen that what is the formula of enthalpy? It is H is equal to U plus PV and it is a state function. So state function है तो initial state पे depend करेगा and final state पे depend करेगा. So let us assume जो initial state के लिए expression है enthalpy का, that is H1 is equal to U1 plus P1 V1, जहाँ पे U1 है initial internal energy, P1 V1 are initial pressure and volume respectively. सिमिलरली तो फाइनल स्टेट के लिए एंथैल्पी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2. सो द चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय, चेंज इन एंथैल्पी मीन्स डेल्टा H. डेल्टा H क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट और फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी. सो वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ H2 एंड H1. सो ये आ गया हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1. सो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस इक्वेशन, that is delta H is equal to U2 plus P2 V2 minus U1 minus P1 V1. और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी. एंड U2 माइनस U1 ये क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज U2 क्या है हमारे पास? फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड U1 इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी. तो हमारे पास U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड जो P2 V2 माइनस P1 V1 वी कैन राइट इट एज डेल्टा ऑफ PV. नाउ अगर रिएक्शन जो हो रही है दैट इज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दैट केस P1 विल बी इक्वल टू P2, दैट वी कैन टेक इट एज P. सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. सो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. Now heat content we can denote it by QP because constant pressure पे हो रहा है. So delta H is equal to QP. Next is expression in enthalpy change for solids, liquids and gaseous. Now let us see for solids. Solids के लिए क्या होता है?
एंथैल्पी चेंज रिएक्शन अभी हमने देखा, एंथैल्पी चेंज का रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बट फॉर सॉलिड्स देर इज नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. So in that case delta V will be equal to 0. So delta or P del V will be equal to 0 because 0 into anything will be equal to 0. So delta H will be equal to delta U for solids. Next is liquids. और लिक्विड के लिए क्या है, सेम हमारे पास एंथैल्पी चेंज का एक्सप्रेशन है. एंड फॉर लिक्विड्स आल्सो, जो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज आएगा. सो इन दैट केस आल्सो हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U फॉर लिक्विड्स. नेक्स्ट आर गैसेस. गैसेस के केस में क्या है, हमारे पास जनरल एंथैल्पी चेंज का रिएक्शन, यस, delta H is equal to delta U plus P delta V. and for gases we know that कि अगर pressure constant भी रखेंगे then also there will be a considerable change in the volume. So in that case delta H will be equal to delta U plus P of V2 minus V1 because volume में change आ रहा है. So there will be some initial volume, there will be some final volume. So डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1, ये आ गई हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H की इक्वेशन. सो इन टर्म्स ऑफ अगर मोल निकालते हैं, सो वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT. सो हियर इज PV2. PV2 की जगह हम पुट कर सकते हैं N2RT एंड PV1 की जगह पुट कर सकते हैं N1RT. So on putting these values in the equation, we are having delta H is equal to delta U plus N2RT minus N1RT. और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, then we will have this equation as delta U plus RT of N2 minus N1, और N2 minus N1 को हम delta Ng भी लिख सकते हैं. Why G? Because gases के लिए हम ले रहे हैं number of moles. So final expression for enthalpy change is delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. That's all for this topic. Thanks for watching.